Assalamu alaikum everybody. I'm sorry for being late. I had a crisis call that I had to attend for, so I'm extremely sorry. But at the same time, I'm very thankful to Dr. Aiza कि उन्होंने मुझे ये चांस दिया और उन्होंने मेरा सेशन जो है वो थोड़ा सा आगे किया. So I really apologize for that, for being late. The topic that I have today for you guys is autism and the difficulty in sleep patterns. So जो टॉपिक आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए वो है sleep patterns और autism. So difficulty in sleep patterns that our kids are facing with autism. So as we know, जैसे कि मैंने अपने पिछले सेशंस में आप लोगों के साथ बात भी की है और डिस्कस भी किया है, I just want to make sure that I'm live. So give me 1 second to make sure that I am actually live. Okay, I'm just trying to make sure that I am there. So basically what we're going to talk about today is autism and anything that is related to sleep issues. So sleep issues which are related to autism spectrum disorder. So as we know that our kids, they already have issues with sleeping patterns, and especially right now with the passage of time, as our kids are, as time is passing by, and with the passage of time, as we see that our kids are as this pandemic is hitting, and with that our sleep patterns are also disturbed, and as a result of which the sleep patterns of other people, like everybody's sleep patterns, they are disturbed right now. So that's what I wanted to talk about today, and I wanted to bring this topic to you guys so that you guys can understand that how important it is for establish those sleep patterns for our children and sleep patterns for the kids, especially with special needs. So हमारे जो typically developing बच्चे होते हैं उनके लिए भी sleep patterns जो है वो develop करना बहुत ज़रूरी हैं इस वक्त. और अगर उनके लिए जो है वो स्लीप पैटर्न्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं जिनको स्पेशल नीड्स है या जिनको ऑटिज़म है, उनके साथ स्लीप पैटर्न्स डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ कि हमारे जो बच्चे जिनमें फॉर एग्जांपल दैट हैव इश्यूज़ और that are on the spectrum or not on the spectrum, for example, they do have sleep issues, right? So I talk to a lot of parents. मैं बहुत से parents के साथ बात करती हूँ, बहुत से जो हैं मेरे पास पेरेंट्स भी आते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स भी आते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, एंड दे कम एंड दे टॉक टू मी एंड दे टेल मी दैट आवर किड्स आर हैविंग इश्यूज विद स्लीप पैटर्न्स. अब उसमें ये होता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे टॉक टू मी अबाउट, एंड दे टेल मी दैट समटाइम्स हमारे जो बच्चे हैं उनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो है ट्रबल फॉलिंग asleep. So sometimes they have trouble falling asleep, sometimes they have trouble staying asleep. So होता ये है कि सो जाते हैं but then they wake up in the middle of the night. So they wake up in the middle of the night, and then or they wake up early in the morning, and sometimes मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो कि सुबह around like 3 बजे उठ जाते हैं and then they don't go back to sleep, and then some of them are shaking a lot during their sleep. So like they'll be like shaking this side or that side, and they're very restless throughout the sleep. There are also other issues like snoring a lot, gasping for breath while sleeping, bedwetting at night, and also there are these kind of physical issues also. But those issues that are related to any kind of bedwetting or snorting हो गई या snoring हो गई या gasping for air हो गई, तो वो उस तरह के issues हैं जिसमें कि हमें फिर medical जो है वो intervention की help चाहिए होती है. लेकिन कुछ ऐसे issues होते हैं जिसमें कि kids don't fall asleep, don't stay asleep, wake up early, or are restless. Those are the issues that are affiliated with autism, and those are the issues that we can work on, and those are some things that we can look into how we can solve those issues. Usually as in the regular environment, जब मैं जाती हूँ clinical settings में और मैं जाके parents के साथ consultation करती हूँ, when I'm consulting with parents, what I see is that this is a problem anyways, right? So I have parents that come in and they tell me that my kid is not sleeping, and that is an issue, right? But then
these days when the pandemic has hit and all the schedules are upside down, and now with the month of Ramadan also, and some people are fasting, some are not fasting, some are, you know, belonging from different communities, different cultures, different religions, what happens is that kids are not sleeping, right? उनका सारा sleep schedule जो है वो ख़राब हुआ है. So what can we do to encourage those sleep cycles? अब उसमें ये होता है कि we have to first of all as a behavior analyst हम लोग सबसे पहले parsimonious तरीकों के ऊपर जो है वो we believe in them. What is parsimony as a behavior analyst? Parsimony is कि we look at the simplest explanation of a problem. तो simplest explanation जब हम देखते हैं तो उसमें हम लोग we look into what is the simplest explanation for a problem behavior. So अगर sleep को हम problematic behavior के तौर पे देखते हैं तो सबसे पहले हम उसका functional behavioral assessment करते हैं, which means कि हम उसका function of the behavior ढूंढने की कोशिश करते हैं. The function of the behavior is for example attention or escape. तो उसके मुताबिक फिर हम उसकी ट्रीटमेंट जो है वो करते हैं. अब फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चे का बिहेवियर जो है सबसे पहले हम उसका मेडिकल रूल आउट करने की कोशिश करते हैं. सो फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ चाइल्ड हु इज़ गैस्पिंग फॉर एयर, दैट मीन्स दैट देयर इज़ समथिंग फिजिकली रॉन्ग विद अ चाइल्ड, और उसको हम फिजिकली पहले करेक्ट करने की कोशिश करते हैं. बेड वेटिंग आ गई तो उसमें भी जाहिर बात है देयर माइट बी सम प्रॉब्लम दैट इज़ रिलेटेड टू द मसल्स or whatever is happening with the bladder, so maybe we have to look into that. Some kids, they get sleep apnea machines, so it might be that. So those are the medicals that we rule out. But behaviorally what are the things that we can do जो कि हम sleep issues के साथ जो हम उसको deal कर सकते हैं और हम उन problems को solve कर सकते हैं. तो उसमें जो है हम लोग कौन कौन सी interventions जो है वो apply कर सकते हैं. तो after my talk आप लोग जो हो, you're going to be able to provide a comfortable sleep setting for your children. आप लोग establish कर सकोगे एक regular bedtime routines for the kids. I'm going to give you tips ताकि आप लोग जो हो एक रेगुलर स्केड्यूल अपने बच्चों के लिए बना सको और आप अपने बच्चों को यू कैन टीच योर किड्स टू फॉल asleep alone, because this is such a big problem, and I also faced that problem because when my kids were growing up, it was hard for me कि मैं अपने बच्चों को अकेला सुलाऊं. ठीक है, and I think that a lot of it has to do with the family structure or the culture that you belong from, और हम लोग अपने बच्चों को अकेला सोने पे we don't encourage them that much, right? So अकेला सुलाने के लिए we have to encourage them, we have to reinforce them, and then promote daytime behaviors, which means कि हम दिन के वक्त उनके जो behaviors हैं उनको promote करें ताकि रात को वो अपना सोना जो है वो उसको promote करें, and they sleep at night so that they have a peaceful sleep at night rather than sleeping throughout the day. ठीक है, अब उसमें सबसे पहली चीज़ जो हम लोग करते हैं वो ये है कि हम लोगों को we have to make sure कि बच्चों का जो bedroom है that has to be very comfortable. अब कई दफ़ा मैंने ये देखा है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका जो बेडरूम है वो बिल्कुल भी comfortable नहीं होता, which means कि या तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है या वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अब वेदर्स आर चेंजिंग, एलर्जीज़ आर किकिंग इन, सो उसकी वजह से मैंने देखा है कि कई दफ़ा हम लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, सो वी हैव अ लॉट ऑफ एयर कंडीशनिंग ऑन, और वी आर वेरी कोल्ड एंड वी हैव अ लॉट ऑफ हीट ऑन. सो बिकॉज ऑफ दैट पर्पज़ वी डू नॉट हैव द राइट टेम्परेचर फॉर द किड्स. सो मेक श्योर दैट द बेडरूम्स आर comfortable for the kids, which means कि they shouldn't be too hot or shouldn't be too cold. They should be quiet and dark, which means that आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि हम लोग जो है वो नॉक्टर्नल एनिमल्स नहीं हैं. ठीक है, हम लोग जो हैं अल्लाह ताला ने हमें ऐसा बनाया है, God has made us or nature has made us in such a way that we are supposed to sleep at night. So once we are supposed to sleep at night, that means that we sleep at night, right? So once the night kicks in, we sleep, which means that the night time is supposed to make us sleep. So our rooms need to be dark and there should be peaceful pin drop silence in there, and then our child should be sleeping at night. And if there is light coming into the room from the street or the sunlight in the morning, consider adding heavier curtains so that the rooms are dark. So jitna dark अच्छा room होगा उतनी ही अच्छी बच्चे को नींद आएगी. Secondly, the room should be quiet at night.
क्वाइटनेस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अगर बच्चे अपने इर्द गिर्द इतना तमाशा देख रहे होंगे एंड दे आर गोइंग टू बी लुकिंग एट सो मच नॉइज, दे आर नेवर गोइंग टू बी एबल टू स्लीप, राइट? सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव क्वाइटनेस इन द रूम. अब मैंने कई दफ़ा यहाँ पे ये देखा है, एंड आई वॉजंट अवेयर ऑफ दिस, बट आई हैव सीन दोज लाइक वाइट नॉइज मशीन्स, जो कि अब आई थिंक पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है, इधर अमेरिका में भी बहुत कॉमन है, और हमारे जितने भी काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट हैं, दे ऑल्सो नो अबाउट दोज मशीन्स. दे आर कॉल्ड एज वाइट नॉइज मशीन्स. So you can just buy a machine that is called as a white noise machine, and you can plug it, and that just creates a noise. And a lot of sleep clinics in America are using them, because जहाँ पे sleep studies conduct होती हैं वहाँ पे वो white noise machines जो हैं वो use होती हैं, और उससे क्या होता है कि बाहर की जितनी भी noise बच्चे के लिए आ रही होती है वो cancel out हो जाती है, और सिर्फ बच्चा जो है उसको वो noise आती है, और वो noise इस तरह की होती है कि वो बाहर की सारी noise को cancel कर देता है, और बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी नॉइज़ को सुनता है जो कि उस मशीन से आ रही होती है, विच इज़ जस्ट लाइक अ नॉइज़ टू न्यूट्रलाइज द नॉइज़ इन द environment. So make sure that it's quiet. There is no other noise coming from the outside which is like disruptive noise for the child. Consider the environment. Children with autism spectrum disorder are aware of noises at night. What do not bother other children. अब आपको ये भी देखना है कि कई हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनको autism spectrum disorder है, they react to noises, right? And that's why we have those headphones for our children. So a lot of our kids, they react to noises. अब मुझे अच्छी तरह याद है, a couple of years ago my daughter was doing an experiment, and in that experiment what they were seeing was that there is certain frequency of a sound that can be heard by younger children, but it cannot be heard by older people, which is like of course me. So that frequency of noise could only be heard by younger kids, and so it's the same for our kids with autism. होता ये है कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, they can hear those frequency of noises, but then we cannot hear them, and our kids with autism, they are more sensitive to those noises, right? So they can hear those noises more, right? Once they can hear those noises more, what happens is that tends to keep them awake more. So we want to make sure that our kids with autism, they cannot hear all those noises that are surrounding them, because this environment is going to affect our kids. तो ये जो environment है, ये हमारे बच्चों के इर्द गिर्द जो है वो affect करेगा बच्चों को, उनको noise आएगी, और noise की वजह से वो लोग जो है वो नहीं सो पाएंगे. They are not going to be able to sleep. So they are going to be sensitive to these problems, and they are not going to have a healthy routine. Next जो है, हमें उनकी establish जो है वो इस तरह से करनी है उनका routine, कि उनका routine predictable होना चाहिए, ठीक है ना? अब देखें, हम लोग जो है, हम लोग unpredictable environment में नहीं रह सकते, ठीक है? हम जैसे जैसे age out होते जाते हैं, हमारा एक routine होना बहुत ज़रूरी है. अगर हमारा एक routine नहीं होगा तो हम लोग predictable नहीं रहेंगे. जब हम predictable होते हैं ना, तो हमारी सारा कुछ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाता है. ज़रा सा भी हमारे एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, तो वी आर थ्रोन ऑफ, राइट? I'll tell you about myself. If something happens out of the norm, it throws me off for the whole day, right? So it throws our kids off also. So once it throws our kids off, वो unpredictable हो जाता है. तो make sure कि आपकी जो bedtime routines हैं, जो कि आप अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, the routines that you make for your kids, they have to be very, very predictable. So make sure that आप अपने बच्चों का routine इतना predictable बनाएं कि आपको पता हो कि suppose 7 o'clock आपने अपने बच्चों का bedtime एक routine बनाना है, जिसमें कि आपने first of all आपने उनको dinner कराया. डिनर के बाद आपने उनको they took a shower, they took a bath with warm water. आपने पहले उनको, you gave them a massage with oil, with lotion, with whatever. Then you gave them a shower, a bath, a soothing activity for the child. And then this stability of the routine should keep on going. ये stability of routine जो है ये कभी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए. और avoid activities, यानी कि वो एक्टिविटीज़ जो कि बच्चों को हाइपर कर रही हैं, उन एक्टिविटीज़ को आपको बिल्कुल रोकना है. Those activities such as watching television, going on movies, electronics, games, computers, loud music, bright lights, sugary foods like ice creams and chocolates and donuts and candies, they should be totally avoided. It is best to avoid activities like running and jumping or roughhousing. So कोई भी ऐसी activity जो कि बच्चों को
बहुत ज़्यादा हाइपर कर रही है, वो एक्टिविटीज़ उस वक़्त आप लोगों को अवॉइड करनी है जो कि आपके उस बेड टाइम रूटीन से पहले आती हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि उस बेड टाइम रूटीन से पहले आ रही है, जो कि बच्चे को ज़्यादा हाइप अप कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, म्यूज़िक आ गई, ब्राइट लाइट्स आ गई, शुगरी फूड आ गया, रफ हाउसिंग आ गई, खेलना खिलौना, ये वो सब कुछ। कई दफ़ा बच्चे कुश्तियाँ लड़ना शुरू हो जाते हैं अपने चाचू के साथ, दादा के साथ, डैड के साथ। नो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। दैट्स लाइक योर वाइंडिंग। जैसे घड़ी होती है ना, घड़ी को आप सुबह चाबी देते हैं और शाम तक वो जो है वो वाइंड डाउन हो जाती है, उसी तरह से बच्चों को यू हैव टू वाइंड देम डाउन आफ्टर 7 o'clock। यू हैव टू सेट दोज रूटीन्स। आप बच्चों को अपने रूटीन पे नहीं चला सकते, आपको बच्चों को उनके रूटीन पे चलाना है। और ऑलवेज रिमेंबर, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो जो आपका जो रूटीन आपको कुदरत ने एक बनाया हुआ है ना, उसी के साथ आपको भी चलना है और बच्चों को भी चलाना है। जब आप उसके साथ चलेंगे तो आप देखेंगे कि आप में भी बहुत अच्छा फ़र्क आएगा और आपके बच्चों में भी बहुत फ़र्क आएगा। एंड दिस इज़ रियली रियली इफेक्टिव फॉर किड्स विद ऑटिज़म। अच्छा, अब स्टेप्स आपको क्या लेने हैं कि ये जितने भी रिसोर्सेज हैं ये सारे मैंने ऑटिज़म स्पीक्स की वेबसाइट से लिए हुए हैं, और उसके अलावा मैंने कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो मैंने एक्सप्लोर किए थे, और मैंने कुछ टॉक सुनी थी, जिसमें से कि एक टॉक जो है वो मैंने न्यूजीलैंड में डॉक्टर लॉरा मिकी हैं जो कि एक स्लीप क्लिनिक चला रही हैं, जिसमें कि काफ़ी डॉक्टोरल स्टूडेंट्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनसे ली है। और कुछ ABAI विच इज़ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस इंटरनेशनल की वेबसाइट से मैंने ली हुई हैं। तो वो रिसोर्सेज मैं आपके लिए लेके आई हुई हूँ। अच्छा, अब उसमें द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ कि आपको अपने जो बच्चा है उसका बेडरूम जो है, यू हैव टू मेक इट क्वाइट, यू हैव टू मेक इट पीसफुल, यू हैव टू मेक इट वेरी काम। ठीक है, आपके अपने बच्चों के लिए यू हैव टू मेक टू डू लिस्ट्स। ठीक है, कि आपने अपने बच्चों का एक स्केड्यूल बनाना है कि दिस इज़ व्हाट योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू डू फर्स्ट, and then and after that you have to take the child through it। बेशक आप पिक्चर्स वहाँ पे कर लो, वो पिक्चर्स उतारता जाए बच्चा, अपना स्केड्यूल फॉलो करता जाए, and determine which events are calming for your child। is it massage, is it the bath, and which events are stimulating। अब इसमें ये होता है कि you don't really need a professional to tell you कि भाई ये events जो हैं ये आपके बच्चे को हाइपर कर देंगे और ये वाले events जो हैं ये आपके बच्चे को काम डाउन कर देंगे। यू आर अ पेरेंट और आपको खुद पता होगा कि आपका बच्चा किस चीज़ से हाइपर हो रहा है और किस चीज़ से काम डाउन हो रहा है। तो जो एक्टिविटीज़ आपके बच्चे को हाइपर कर रही हैं वो एक्टिविटीज़ आप अवॉइड करें सोने से पहले, और जो एक्टिविटीज़ आपके बच्चे को काम डाउन कर रही हैं उन एक्टिविटीज़ को आप ज़्यादा कर दें सोने से पहले। उसके अलावा कुछ यहाँ पे इन्होंने तस्वीरें जो हैं वो दी हुई हैं जो कि मैं आपको दिखाऊँगी बेड टाइम रूटीन की, जो कि एज सच यहाँ पे इस तरह से उन्होंने बताई हैं, जिस तरह से ये विजुअल स्केड्यूल्स हैं। और ये ऑटिज़म स्पीक्स की वेबसाइट पे पूरी एक बुकलेट है जो कि मौजूद है, और ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देख लें, ये इस तरह के ये है विजुअल स्केड्यूल एक बना हुआ है जिसमें कि उन्होंने पूरा दिखाया है कि हाउ द चाइल्ड कैन गो थ्रू द स्टेप्स ऑफ टॉयलेटिंग, and then like getting ready for bed and using the bathroom, washing hands, reading a story। so ये पूरा एक visual schedule जो है ये Autism Speaks की वेबसाइट पे बना हुआ है। so you can use this also। बोर्ड मेकर में बहुत अच्छी रिसोर्सेज हैं, मैं वीडियोस बना रही हूँ, वीडियोस जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हैं, आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। और इस तरह की काफ़ी पिक्चर्स आप गूगल से भी ले सकते हैं और वो बना सकते हैं। अच्छा, अब हाउ डू यू टीच देम, राइट? So you need to teach your kids to sleep alone। This is a very big thing। हमारे जो माशरा है, जो हमारा इन पाकिस्तान, we want our kids to sleep with us, जिससे कि हमें भी अच्छा फील होता है, हम भी गिल्टी नहीं फील करते, और बच्चे को भी हम समझते हैं, बच्चा भी जो है they feel really really secure। but actually developmentally this is not appropriate। so बच्चों को हमें अकेला सुलाने की आदत डालनी चाहिए। शुरू में बच्चे रोते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता they get used to it। अब ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा बच्चा जब रोए तो यू गो टूवर्ड्स दैम और आप जाके उनको जो है वो चुप कराएं या उनको रीइंफोर्स करें। यू डोंट हैव टू डू दैट। यू हैव टू काम डाउन, यू हैव टू स्लो डाउन।
सो थोड़ा थोड़ा करके आप उनको थोड़ी थोड़ी देर के लिए छोड़ें, थोड़ी थोड़ी देर आप उनके पास रहें और आहिस्ता 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 आप अपने आप को फेड आउट करना शुरू कर दें उस इन्वायरमेंट से, ताकि बच्चों को अकेले सोने की आदत हो और वो अपने आप को खुद सेल्फ सूद करें. दे हैव टू सेल्फ सूद देमसेल्व्स टू स्लीप, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ देयर पैटर्न्स आर गोइंग टू डेवलप ओवर टाइम टू स्लीप बाय देमसेल्व्स. एंड वंस दे लर्न टू स्लीप बाय देमसेल्व्स, उनके जो स्लीप रूटीन्स हैं वो आपके स्लीप रूटीन से सेपरेट हो जाएंगे. और जैसे ही उनके स्लीप रूटीन्स आपके स्लीप रूटीन से सेपरेट हो जाएंगे, आप खुद देखेंगे कि उनके जो स्लीप साइकिल्स हैं वो खुद ब खुद बेहतर होने शुरू हो जाएंगे. सो देयर स्लीपिंग साइकिल्स आर गोइंग टू गेट बेटर विद टाइम, but once they start sleeping separately anyway, so that is going to be a reinforcing event in itself, right? So a tool for teaching is also called as a bedtime pass. A bedtime pass is a useful tool for older children. This is a card that your child can present to you if he wakes up at night. Which means your child may use it to trade for something brief, such as a quick hug or a drink of water. Your child should be taught that they may only use this pass one time. So ये एक फेडिंग टेक्निक है. अगर आपने बड़े बच्चों को अगर आप ट्रांजिशन करा रहे हो तो आप उनको एक ट्रेडिंग पास दे सकते हो, बेड टाइम पास दे सकते हो. वो उस पास को आपके लिए एक दफ़ा यूज़ करें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप उसको भी फेड आउट कराओ. लेकिन द गोल इज़ कि आपने बच्चों को अकेले सुलाने की आदत डालनी है. This is healthy for the parents and this is healthy for the child. So developmentally बच्चों को आपको separate सुलाना है, उनको white noise की आदत दिलानी है, quiet कमरे की आदत दिलानी है, लाइट फ्री जोन होनी चाहिए है, खामोश काम कमरा होना चाहिए, तब उनके जो स्लीपिंग साइकिल्स हैं वो बेहतर होंगे. सेकेंडली, द टाइम टू स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द टाइम टू राइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दे शुड sleep at the right time, they should wake up at the right time, they should be early risers and they should be early going to sleep. अच्छा, अब food comes. Additional things that should be kept in mind are the meals that you are serving to the children, right? अब जो meals आप उन बच्चों को सर्व कर रहे हो, वो meals जो हैं वो बहुत important होते हैं. Those meals should be very very healthy. ठीक है. अब उसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्नैक्स नहीं होनी चाहिए आपके खानों में. हेल्दी बैलेंस्ड मील्स होने चाहिए, लो इन शुगर, लो इन कार्ब्स, एंड दे शुड बी द वंस दैट शुडंट गिव यू अ लॉट ऑफ एनर्जी एट नाइट बिफोर दे स्लीप. क्योंकि अगर उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो उतने ही एनर्जेटिक हो जाएंगे सोने से पहले. तो ज़्यादा एनर्जी वाले खाने जो हैं वो उनको दोपहर और सुबह के वक्त देने चाहिए, और जो कम एनर्जी वाले खाने हैं वो उनको शाम के वक्त देने चाहिए, ताकि दे कैन स्लीप रियली रियली वेल एट नाइट. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी वो है फिज़िकल एक्टिविटी. ड्यूरिंग द डे यू हैव टू ट्राई कि आप अपने बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा कर दें. उससे क्या होगा कि बच्चे दिन के वक्त जो है वो थक जाएंगे और रात को वो सोएंगे. सो दे आर गोइंग टू स्लीप वेल एट नाइट. इफ़ यू आर मेकिंग देम डू अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे, they are going to sleep anyways at night. Shorten their naps during the daytime. Don't give them a lot of naps. They are going to sleep well at night. Caffeinated foods and beverages, you need to avoid them during the daytime. And also make sure that your kids are they are reacting well to other kids. They are playing with the other kids in the household. सारे बच्चों के बेड टाइम्स घर में जो है वो एक जैसे होने चाहिए. They shouldn't be scattered across. They should be together. They should be well synced in. And all the other kids should be like working as helping hands for you, right? Okay, now I'm going to go towards an article and I'm going to talk about it. This article is this was a research study जो कि हुई थी Emily Abel, Yon Kim और केलरमैन और ब्रॉडहेड ने की थी, और ये 2017 की स्टडी है. इसमें रिकमेंडेशंस उन्होंने दी थी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से, और उन्होंने ट्रीटमेंट रिसोर्सेज दिए थे फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिनको प्रॉब्लम्स थी स्लीप इश्यूज़ में. इसमें उन्होंने सारे के सारे स्लीप जो इश्यूज़ थे उनके बारे में बात की थी, जिसमें कि दे डोंट फॉल अस्लीप, दे वेक अप अर्ली, or they are having trouble falling asleep. उसमें उन्होंने जो identification की थी sleep problems की, they identified the sleep problems by doing a functional behavioral analysis, जो कि हमारी term है as applied behavior analyst. तो पहले हम एक चीज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं फंक्शनल बिहेवियर एनालिसिस, जिससे हम फंक्शन फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बिहेवियर.
आफ्टर दैट हम जो है फिर रिकमेंडेशंस देते हैं. एज अ बिहेवियर एनालिस्ट जब हम काम करते हैं तो हम इस तरह से काम करते हैं कि हम पहले एक स्लीपिंग क्वेश्चनियर देते हैं पेरेंट्स को, जिसमें पेरेंट्स जो है वो इनडायरेक्टली हमें उस क्वेश्चनियर में सब कुछ भर के देते हैं, जिसमें कि डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस होते हैं कि बच्चा जो है वो किस वक्त सोता है, किस वक्त उठता है, कितनी दफ़ा उठता है, खाने से सोने से पहले क्या खाता है, उसके खाने में नॉर्मली क्या होता है, उसमें उसके दिन में वो यूजुअली क्या करता है. एंड आफ्टर वी गेट ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, फिर हम देखते हैं कि कितनी लाइट होती है उसके कमरे में, कितना नॉइज़ होता है, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं. ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर हम स्लीप डायरीज़ की तरफ जाते हैं. फिर हम पेरेंट्स को कहते हैं कि वो स्लीप डायरीज़ जो है उस पर हमें डेटा कलेक्ट करके दें कि किस तरह से ओवर द वीक्स वो जो है उसका डेटा कलेक्ट हो रहा है. आफ्टर दैट हम वी डू समथिंग दैट इज़ कॉल्ड एज एक्टिग्राफी, और इस रिसर्च में उन्होंने एक्टिग्राफी यूज़ की थी. और एक्टिग्राफी में चिल्ड्रन स्लीप में ऑल्सो बी मॉनिटर्ड विद एन एक्टिग्राफ विच इज़ अ स्मॉल सेंसर दैट यूजेज एक्सेलरोमीटरी to provide a minute by minute recording of motion. So this was something that they used in this study. So this is something that sleep clinics actually use. अब ये सिर्फ autism spectrum disorder के लिए नहीं यूज़ होता, ये normally जो sleep studies होती हैं जो कि adults के साथ भी होती है, जो कि और किस्म की disabilities के साथ होती है, वहाँ पे भी ये यूज़ होता है. तो इससे exactly पता चल जाता है कि कितनी restful sleep बच्चे ने ली है और नहीं ली. तो इस study में एक्टिग्राफी भी यूज़ हुई थी, और उसके बाद रिकमेंडेशंस दी गई थी बिहेवियरल स्लीप पैटर्न्स के लिए. और उसमें सबसे पहली जो रिकमेंडेशन थी वो थी जनरल बिहेवियरल ट्रीटमेंट्स, जिसमें कि यही था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनकी नैप्स को अवॉइड किया जाए, उनको ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी दी जाए दिन में, और स्लीप हाइजीन विच मीन्स कि वो जो मैंने आपको एक विजुअल अभी दिखाया था जिसमें कि उनको यू हैव टू मेक श्योर दैट दे ईट the right thing, they take a shower, they do their toothbrush, and after that they wear clean clothes and they get in bed. Second was parent training, which means कि parents को train किया जाए कि वो उन बच्चों का environment किस तरह से उस वक्त बेहतर बनाएं ताकि बच्चे जो है वो properly सोएं. तो पहले उनकी sleep hygiene पे काम हुआ था, उनकी behavior treatment हुई थी, parents को train किया गया था, और उसके बाद उनके behavior treatments for sleep onset, यानी कि उनकी जो sleep onset behaviors थे उस पे काम हुआ था. उसके बाद एक्सटिंक्शन विच मीन्स कि जो उनके बिहेवियर्स थे टू गेट आउट ऑफ बेड, उन पे एक्सटिंक्शन प्रोवाइड हमने की थी. यानी कि जब वो बेड से निकल रहे थे तो हम उनको रीइंफोर्स नहीं कर रहे थे, और जब वो बेड में स्टे कर रहे थे तो हम उसको रीइंफोर्स कर रहे थे. और उसके बाद हमने बेड टाइम रूटीन्स में से अपने पेरेंट्स को फेड आउट किया इस स्टडी में. और आफ्टर दैट हमने देखा कि दिस स्टडी बिकेम वेरी सक्सेसफुल एंड दिस बिकेम अ मॉडल, एंड अ लॉट ऑफ पेरेंट्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग दिस स्टडी राइट नाउ. सो मोर स्लीप क्लिनिक्स आर फॉलोइंग दिस. सो ओवर हियर इन न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की भी एक स्टडी मैंने अभी की है जो कि देयर इज़ वन ऑफ द पॉडकास्टर्स जो कि बिहेवियर बेब जो है वो करती हैं, उसमें उन्होंने शीज़ टॉक्ड अबाउट इट. एंड डॉक्टर जो है लिंडा, उन्होंने पूरा एक वेबिनार इसके ऊपर किया है. सो अगेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टडी दैट इज़ अवेलेबल. हर पर्सन जो कि मेरा अभी ये देख रहा है लाइव मेरी टॉक, वो अपनी नॉलेज के मुताबिक या अपनी रेपर्टोयर के मुताबिक उन स्टडीज़ को स्टडी कर सकता है. सो एज अ पेरेंट आप लोग ऑटिज़म स्पीक्स की वेबसाइट पे जाके इस रिसोर्स को डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़ का है. जो प्रोफेशनल्स हैं तो प्रोफेशनल्स दे कैन गो एंड दे कैन लुक एट articles. This is an article that I got from the ABAI website, which is recommendations for identifying sleep problems and treatment resources for children with autism spectrum disorder. So this is free, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, और ये आप लोग वहाँ से रिसोर्सेज ले सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं. सो आई थिंक दैट इफ़ यू यूज़ ऑल द स्ट्रैटेजीज दैट आई टॉक्ड अबाउट टुडे, you are going to have a very, very healthy routine with your kids, and all the sleeping problems can be solved. Another thing that I wanted to stress about is that sometimes there's another thing that some doctors do recommend, which is melatonin. Or melatonin is something which is it's a natural hormone जो कि हमारी body में बनता है रात के वक्त. So as the night comes, there is something that is called as melatonin, and this melatonin, it starts to build in our body, and when this melatonin it builds in our body, we fall asleep, right? So sometimes some doctors do recommend that
for kids, and with the passage of time, the kids, they start falling asleep by themselves, and then you can fade that melatonin out, but you can only give that once you've asked a doctor. And after that, you can see if you want to carry on with it or you don't want to carry on with it. But always remember that you have to change the variables in the environment. So आप जब अपने variables अपने environment के change करोगे, तो things are going to start getting better anyways. ठीक है. सो जब आप अपने वेरिएबल्स को चेंज करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके बच्चों के बिहेवियर्स भी जो हैं वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे. सो विद दैट बीइंग सेड, आई एम गोइंग टू फिनिश माई टॉक. आई थिंक दैट आई गेव यू रियली गुड रिसोर्सेज टुडे टू यूज़ फॉर योर चिल्ड्रन. आप अपने बच्चों के साथ ये रिसोर्सेज यूज़ करें और इनको यूज़ करके आप देखें कि अगर ये बच्चों के लिए बेहतर यूज़ होती हैं. अगर आपके बच्चों में बेहतरी आती है तो आप ज़रूर मुझे बताएं. अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर पूछें. अगर आपने मेरे से कंसल्टेशन करनी है, आप मेरे से ज़रूर कंसल्टेशन करें. आप में हमारा पेज भी है, आप इधर भी कर सकते हैं क्वेश्चन हमें, और हम आपसे कंसल्टेशन कर सकते हैं. बट दीज आर स्ट्रैटेजीज़ जो कि आप अपने बच्चों के साथ यूज़ करें. बट यू हैव टू discipline is the key to all these things, and inshallah things will get better for you. So I'm going to wait over here for a couple of minutes. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछें, नहीं तो I'm always there later on to answer your questions. Thank you so much for listening to me. Thank you so much, volunteers to serve humanity, that you hosted my talk. And take care of yourself. Stay safe in this pandemic and have a wonderful day. Assalamu alaikum. Bye bye. Any other questions? I don't see any questions here, so I think I'm going to end. Okay, so this is Jawahar Alvi. I'm a learning behavioral specialist, a BCBA, and the executive director and the owner of BASIS, Behavior and Special Educational Services. And we are international, so we are in USA as well as Pakistan, and we are there to serve our exceptional lives. So have a wonderful day and stay safe.